Jai Hind to all. Myself Dr. Nilesh Kumar Gupta. I am working as a professor at Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad in Department of ECE. So, I will deliver a lecture today for a subject of Information Theory and Coding. Its AK2 code is KEC 075 and today's title is Optimal Code. Okay. Last time I told you about the source codes. There are number of source codes available, okay, by which we can encode our information, okay, through the source coding. But we have to optimize our way, we have to design, we have to think about the optimal code. उस पे ज़्यादा हमें डिस्कशन करना है, okay. That also we can give using the source coding theorem and so on. Now, these are the concept that I told in my last lecture, that is recall here source coding concept that I told you, then various codes, source codes, those are available and craft included. This is the sufficient, okay, and required condition for our source codes like prefix or instantaneous codes, okay, that I told in my last lecture. Okay. Now, optimal code, for what our motto is what? Our motto is what? That we have to design a optimal code, optimal source. Optimal का मतलब क्या होता है? What is the meaning of optimal? Optimal का मतलब है to get the best possible results, okay, in keeping our mind constants, क्योंकि some limitation constants also हमारे पास होती हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट आउटकम निकालना है और इस तरह का कोड डिजाइन करना है, दैट विल बी कॉल व्हाट? ऑप्टिमल कोड. सो कैसे होगा? मैंने क्या बताया आपको, कोडिंग तो हम कर देंगे 10010110 कुछ भी कोडिंग दे दी हमने, बट इट विल बी सो लार्ज, सो बिग, सो वी हैव टू मिनिमाइज अवर दैट कोडिंग लेंथ. लेंथ हमको कम से कम रखनी है. सो मिनिमाइज द एल और लेंथ. और एल कैसे देते हैं? बाय दिस फॉर्मूला समेशन पी आई एल आई. सो फॉर अ मैसेज इट्स प्रोबेबिलिटी एंड इट्स कोड वर्ड लेंथ. व्हाट इज? तो हमें ऐसा सोर्स कोड वर्ड लेना है जिसकी एक्सपेक्टेड लेंथ, ओके, जिसकी एक्सपेक्टेड लेंथ दैट इज एल गिवन बाय द समेशन पी आई एल आई, ओके, विल बी मिनिमम. जो क्या हो? मिनिमम. This is our standardized optimization process. So, we have to minimize our code word length in that code, and that will call what? Optimal code. Now, we have to see here how we will take this that formula, okay, L is equal to summation P I L I. So, we have to prove, or we can see here from this derivation. Okay. So, in this derivation you can see here j is equal to summation p I L I plus lambda summation d to the power minus का L I. So, constant minimization using Lagrange multipliers is the minimization of है. lambda क्या है हमारा? lambda हमारा Lagrange multiplier है, multiplier, okay. दिस इज अवर कंडीशन जिसके लिए हमें काम करना है. समेशन ऑफ पी आई एल आई लैम्डा लैग्रेंज मल्टीप्लायर, एंड दिस इज अवर सफिशिएंट कंडीशन, दैट इज क्राफ्ट इनइक्वालिटी. सो जे इज इक्वल टू our condition plus lambda plus lambda into constants. So, we have to find out for its minimization or optimum value. So, we have to differentiate this respect to L I. So, dj upon dl I is equal to, differentiate करेंगे इसको, p I minus lambda d to the power minus L I log of d.
Now we have to set this derivative equal to 0, because we have to find out the value of lambda here. This is unknown value. Okay. For that, what d to the power minus L I is equal to P I upon lambda log d, that we will get. Now substituting this in the constant to find the lambda, हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है. ओके, दिस इज द कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब ये कंडीशन है, ये कंडीशन तो हमें करनी ही पड़ेगी, सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. दैट इज अवर क्राफ्ट इनइक्वलिटी कंडीशन. अब what you will get, lambda is equal to 1 upon log of d and pi is equal to d to the power minus ka Li. Now after the putting the equation, value of lambda and some conditions here, yielding the optimal code word length, that is Li, this is the code word length minus log d pi. Now this yields generate expected code word length to be L pi summation pi Li. Now pi Li को हम क्या लिख सकते हैं, log d pi. ओके, एंड पी आई इंटू लॉग पी आई क्या होता था हमारा, याद करें अपन, डी मतलब 2, बाइनरी के बाद 2 हो जाएगा. तो समेशन पी आई लॉग बेस ऑफ 2 पी आई इज इक्वल टू क्या होता था, एच एक्स, एंट्रोपी ऑफ द सोर्स. तो नई चीज आ गई इससे. तो दैट एक्सपेक्टेड लेंथ दैट वी वांट टू जनरेट और एक्सपेक्टिंग, that is equal to entropy of the source. So this derivation, this outcomes we can prove in this way. This is very simple way. Okay. You have to keep in your mind our minimization problem, जिसके लिए हमको काम करना है for designing the optimal code with craft inequality sufficient condition, must condition. Okay. Now we can see also theorem here. Okay. What I proved there, our expected length under the optimal code, that is equal to the entropy of the source. Now expected length of any instantaneous D array code, this is the theorem. D array code for a random variable x is greater than or equal to entropy. तो जो L की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, हमारी एंट्रोपी ऑफ द सोर्स से ज़्यादा या इसके बराबर होती है. सो डी टू दी पावर माइनस का एल आई इज इक्वल टू पी, ये हमने देखा था विद इक्वलिटी एंड इफ ओनली. लास्ट डेरिवेशन वी सा दिस. ओके, दैट पी आई इज इक्वल डी टू दी पावर माइनस का एल आई. नाउ वी कैन राइट डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड लेंथ एंड एंट्रोपी एस. तो यदि इसमें डिफरेंस देखें, एक्सपेक्टेड लेंथ एंड एंट्रोपी, सो एल माइनस एच एक्स. एल का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन पी आई एल आई, और एच का होता है पी आई लॉग पी आई, और प्लस में पी आई लॉग 1 अपॉन पी आई. ओके, दिस इज द एच फॉर्मूला. ओके, वी आर पुटिंग द फॉर्मूला हेयर ओनली. नाउ माइनस का पी आई लॉग एल आई की वैल्यू क्या थी हमारी, पीछे हमने देखी थी लॉग डी, डी की पावर माइनस का एल आई. एक ही बात है, हम कर देंगे. तो नाउ पी आई माइनस, यदि इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, पी प्लस पी आई लॉग डी. लेटिंग आर आई इज इक्वल टू डी टू द पावर माइनस का एल आई समेशन डी टू द पावर माइनस का एल आई, एंड सी इज इक्वल टू समेशन डी की पावर माइनस एल आई. यदि हम एज्यूम ये कर लेते हैं और इसको पुट करते हैं, ओके, नेक्स्ट देन वी ऑब्टेन व्हाट, एल माइनस एच और एल माइनस एच डी एक्स इज इक्वल टू समेशन पी आई लॉग डी पी आई अपॉन आर आई माइनस लॉग डी सी. नाउ इफ यू सी दिस एक्सप्रेशन, so it is like a what, earlier in my previous lectures I told about the concept of relative entropy. So if I compare that relative entropy with this formula, then what I obtain, what I get, this is the relative entropy between the P and R plus log d 1 अपॉन सी. ये माइनस है, यदि हम ऊपर नीचे ले जाएंगे इसको, सो माइनस विल बी प्लस लॉग डी 1 अपॉन सी, और इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ओके, कब होगा, या एल
बड़ा होगा या बराबर होगा h के। अभी हम लास्ट में देखा हमने with equality if and only if pi is equal to d to the power minus li, okay, and it is for all integer of I. So, in this way you can prove this theorem, okay. This like my last PPT, okay, in which we try to find out expected optimal length under the optimal code, okay. Now, source coding theorem, this is a very important theorem, okay. Generally it can be asked in examination. So, this is related what bounds on optimal code length. Optimal code length तो हमें निकालनी कम से कम निकालनी है, but we have to keep in some condition in your mind also. So, that what code that achieves an expected description length L within one bit of lower bound, that is, so ये L जो है this is between the hx and hx plus 1. So, some lower bound, some upper bound we have to keep in our mind. Let x be an ensemble of letters from a discrete memory source. Generally हम जो source लेते हैं वो क्या होता है, DMC होता है, discrete memoryless channel. Similarly here discrete memory source, that will be memory, but it contains some memory also. Discrete values are there and some memory with some memory source with finite entropy hx and output symbols xi 1 2 and so on with probability 1 2 up to the L. पार्ट ए लेके चलें है ना, लोअर बाउंड लेके चलें, मान लो इक्वेशन ए का लोअर बाउंड लेके चलें तो लेंगे तो कोड वर्ड दैट हैव लेंथ ऑफ li from I from 1 to k. So, hx minus L is equal to, we have to put value of hx here and L. It will be in terms of equation number 1, only you have to put their values, okay. So, जबकि लास्ट PPT में आपको बताया भी है वही चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं अंडर द सोर्स कोडिंग थ्योरम. Now, we know what that the inequality. So, as per the inequality equation becomes hx minus L less than or equal to log d this one, okay. So, this type of condition from that formula you can write here. So, what you can prove from here hx minus L less than or equal to 0 or hx less than or equal to L, that will be proof, or this we are proving here for lower bound, okay. Now, part B, for if we consider that equation A for upper bound of the condition. So, it will be d to the power minus का li pxi, और pxi की वैल्यू d की पावर माइनस li से d to the power minus li plus v के बीच में होगी. So, further part of this is equation number 2. So, if you write this d to the power minus li less than or equal to pxi, if you take summation both sides over the limit of this, then we can get this type of equation. And finally, what we can obtain this condition, that is the what our Kraft inequality or the sufficient condition for source code. Now, पार्ट इन इक्वेशन पार्ट 2 इक्वेशन नंबर 2 का, तो उसके यदि हम लें पी एक्स आई लेस देन इक्वल टू डी की पावर माइनस का एल आई प्लस 1. नाउ टेकिंग लॉग डी ऑन बोथ द साइड्स. सो लॉग डी पी एक्स आई, लॉग डी लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा. सो एल आई लेस देन 1 माइनस लॉग ऑफ डी पी एक्स आई, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय पी एक्स आई फॉर द समेशन ऑफ 1 to k. So, if you do this, we know every probability summation overall summation is equal to 1. So, it will be this, okay. तो यहाँ भी प्रूफ हो गया L is less than hx plus 1. So, upper bound is also proof. तो in this way source coding का upper bound and lower bound you are proving from this equation, from this expression that I told this one, okay. This is, तो पहले हमने ये वाली कंडीशन प्रूफ करी, फिर हमने ये वाली कंडीशन.
इसको इक्वेशन नंबर 1 से हमने किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 से हमने किया. So in this way we can prove source coding theorem. So bounds on optimal code length tell us for any prefix code used to represent the symbol from a source and the minimum number of bits. यदि भाई कोड वर्ड की लेंथ कम होगी, ओके, इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स होंगी. लेंथ का मतलब 000 की जगह 00 लगेगा. ओके, represent the source symbols on an average must be at least equal to entropy of the source. So that you have to keep in your mind. So this statement you have to keep in your mind. Now Kraft inequality, we can see Kraft inequality condition for UDC. UDC means uniquely decodable codes. So any instantaneous code must satisfy the Kraft inequality. मतलब यदि कोई इंस्टेंटेनियस प्रीफिक्स कोड है तो वो क्राफ्ट इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड करेगा. ओके, दैट्स फाइनल. द क्लास ऑफ यूनिकली डिकोडेबल कोड्स इज लार्जर देन द क्लास ऑफ इंस्टेंटेनियस कोड. सो वन एक्सपेक्ट्स टू अचीव अ lower expected code word length if L is minimized over all UDC as per the theorem. कौन सी थ्योरम? वही अपनी क्राफ्ट मैकमिलन थ्योरम. द कोड वर्ड लेंथ ऑफ एनी UDC D array code must satisfy this condition. ओके, तो ये तो होना ही चाहिए. Conversely, given a set of code word length that satisfy this inequality, it is possible to construct UDC with this code word lengths. Okay. So, we want to see here the Kraft inequality for UDC. Okay. That is why I am telling this one to you. Now, how we prove? Consider C to the power k, the kth extension of the code, okay, implies that the code formed by the concatenation of k repetitions of the given UDC code C. By the definition of UDC, UDC हम देखें uniquely decodable code, unique decodability, the kth extension of the code is non singular. Since there are only d to the power n different D array strings of length n, and unique decodability implies that the number of code sequences of length n in the kth extension of the code must be no greater than d to the power n. We now use this observation to prove this Kraft inequality. Let us see here. Let the code word length of symbol x belongs to capital X denoted by Lx. Lx क्या है इनकी length. Okay, code word length. For the extension code, if I write here L x1 x2 up to the xk, so I can write this in terms of summation I1 to k L xi. The inequality that we wish to prove here, what? हम क्या चाहते हैं? d to the power minus का Lx less than or equal to 1 हो for this. Now consider the kth power. इसकी kth power तक मुझको जाना है. तो kth power मतलब whole power of k. It means क्या? x1 के लिए, x2 के लिए, x3 के लिए up to the xk. d की power minus Lx1, Lx2, Lxk. ऐसे ही होगा. Okay. Next you can see. And finally you can write what? d to the power minus का L x to the power k. Now gather or collecting these all the terms, and our word length will be d to the power minus का L x की power k is equal to, for the symbol m1 से लेके हम जा रहे हैं kl maximum तक. मैक्सिमम लेंथ कुछ कहीं तक तो होगी 4, 5, 6, 7, 8 और a of m into d to the power minus. यहाँ पे a of m क्या है? L maximum is the maximum code word length और am क्या है? am is the number of source sequences xk mapping into the code words of length m. Number of source sequence a m length वाले. Okay. तो a of m generally less than or equal to d to the power. So
code will be uniquely decodable. So, there is most one sequence mapping into each code m sequences, and there are at most d to the power m sequence. So, we can write here am d to the power minus ka m. Now, from this condition d to the power minus ka lx to the power k summation m 1 to k l max am d की पावर माइनस. अब हम पुट कर सकते हैं a m number of source sequences is equal to d to the power m. In last equation I wrote here, okay, it is less than or equal to. So, we have to put here the value of d to the power m. So, it will be k l max, answer will be k l maximum. Hence, d to the power minus k l I less than or equal to k l max की power 1 upon k. If you solve this, this inequality is true for all k. It is true in the limit whenever our k tends to infinity. If k tends to infinity, then its value will be what? It will be tends to 1. Now, d to the power minus l I less than or equal to 1. So, this is our Kraft inequality. So, here we are able to prove this condition, what? Kraft inequality condition for uniquely decodable codes. So, for uniquely decodable codes for infinite source alphabet, it satisfies the Kraft inequality easily. So, from this expression it is clear that UDC, for the UDC code, the sufficient condition of Kraft inequality will be satisfied 100%. Okay. So, I hope it is clear to everybody, okay, what I told you. So, I told you here the Kraft inequality for UDC. पहले हमने देखा Kraft inequality for what? Prefix or instantaneous code. फिर देखा Kraft inequality for UDC code. UDC means uniquely decodable codes. Okay. So, in this way, because this is sufficient condition, you have to keep in your mind. मतलब ये condition है, इस condition को हमको ध्यान constant है, you can say, and you have to keep in your mind this constant always. कि we have to, for any source coding that you are using for your project, for your coding work, okay, always you have to keep in your mind this Kraft inequality will be there for various number of source code, whether it is our prefix instantaneous code, UDC code and so on. So, in this way we can prove this one. So, this is the sufficient condition. These are the references. So, in this lecture what I completed the concept of source coding. पहले मैंने आपको क्या बताया कि source coding है क्या, what we did in source coding, what is the objective of source coding, and along the source coding data compression is also necessary in this information theory and coding. और डेटा कंप्रेशन हमने और भी देखा क्या कि जनरली वी हैव टू डिज़ाइन, और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि ऑप्टिमल कोड बनाएं. ऑप्टिमल कोड कौन सा हो, उसमें क्या कंस्टेंट हमें लगाना है, क्या? टू मिनिमाइज द कोड वर्ड लेंथ, एक्सपेक्टेड लेंथ कम से कम हो, जो हम कैसे निकालते हैं, एल इज इक्वल टू समेशन पी आई और उसकी लेंथ. जितनी कोड वर्ड की लेंथ कम होगी उतना कम नंबर ऑफ बिट्स लगेंगे और हमारा काम आसान होगा. सिमिलरली क्राफ्ट इनइक्वालिटी दैट वी कैन आल्सो satisfied and see for prefix or instantaneous and UDC codes. Okay, that's all from my side for this lecture. Next we will see in my next lecture. Thank you very much.